Hello everyone. Hope you all are doing well. Let's start with class 7th, chapter number 2, arithmetic expressions, swapping and grouping. So let us consider a simple expressions having only two terms. अगर हमने एक simple expression consider किया having only two terms जिसमें दो terms है. For example यहाँ पे जैसे given है Madhu is flying a drone from a terrace. The drone goes 6 meter up and then 4 meters down. Drone goes 6 meter up means plus and 4 meter down means minus. So write an expression to show how high the final position of drone is from the terrace. So terrace से हमको final position बतानी है कि how high it is. So here up गया था कितना 6 meter and down कितना आया 4. So 6 minus 4 which is equal to 2 meter above the terrace वो गया. We will write this in two terms. First term is 6 plus minus 4 which is equal to 2 and if we swap अगर हमने minus 4 पहले लिखा फिर plus 6 किया तो swapping हो गया but answer comes same. So it doesn't in this case. So swapping the term does not change the sum when both the terms are positive numbers. So swapping से sum change नहीं होता है when both terms are कब नहीं होता है जब दोनों टर्म्स क्या हो पॉजिटिव हो. विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स. अगर नेगेटिव नंबर्स है देन टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक. सो सपोज नेगेटिव नंबर्स है सपोज फॉर एग्जांपल वी विल टेक -4 plus -1 so it becomes -5 or you can write -1 plus -4 which is equal to -5. So yes, swapping the terms having negative numbers does not change the sum. So can you explain why this is happening using the token model of integer that we saw in the class 6 textbook of mathematics? So हमको explain करना है using a token model of integers. So for example -6 plus -2 so which is equal to -8. So minus and minus plus minus is always minus and suppose interchange किया हमने -2 plus -6 which is equal to -8. So here also minus plus minus is minus. So yes, we have explained this why this is happening using the example. So here -6 and उसमें हमने ऐड किया -2 so which is equal to -8. In the same way -2 plus -6 which gives you -8. So swapping the terms does not change the sum when both the terms are positive numbers. That is term 1 plus term 2 is equal to, you can write term 2 plus term 1. Sum remains same. Value will not change if place is changed. Now considering 3 terms, ये हमने 2 terms में देखा. Now considering 3 terms, अगर 3 terms है सपोज नंबर इज -6 प्लस 9 प्लस -10. सो सपोज हम -6 प्लस 9 ऐड कर रहे देन -10 ऐड करेंगे. सो व्हाट विल द आंसर? -6 प्लस 9 इज 3 प्लस -10 सो आंसर इज -7. एंड इफ वी विल ऐड, यहाँ पे हमने क्या किया था फर्स्ट 2 टर्म्स ऐड की थी पहले. नाउ सपोज हम सेकेंड एंड थर्ड टर्म को ऐड करेंगे. -6 प्लस 9 प्लस -10 है. सो सपोज पहले हम -6 एज इट इज हमने रखा है एंड 9 प्लस -10 ऐड किया. सो व्हाट विल हैपन? -6 एज इट इज 9 प्लस -10 इज -1 एंड नाउ -6 प्लस -1 इज -7. सो आंसर इज सेम. एडिंग द फर्स्ट 2 टर्म एंड देन एडिंग देयर सम टू द थर्ड टर्म, ये हमने पहले किया था. नाउ सेकेंड इसमें हमने क्या किया? एडिंग द लास्ट 2 टर्म एंड देन एडिंग देयर सम टू द फर्स्ट टर्म. फिर हमने फर्स्ट टर्म में ऐड किया. सो व्हाट डिड वी सी? द सम्स आर सेम इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में सम सेम है. आंसर सेम आया -7. सो वी नो दैट व्हाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स ग्रुपिंग देम इन एनी ऑफ द अबव 2 ways gives the same sum. अगर निगेटिव नंबर को भी हमने पॉजिटिव वे में ऐड किया in these 2 ways so it gives same sum same आएगा. So will this also hold when there are terms having negative numbers as well? अगर negative number है तो will this also holds? And take some more expressions and check. So expressions लेके हमको ये check करना है. So yes, swapping the terms having negative number does not change the sum.
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया -5 प्लस -1 और यू कैन राइट -1 प्लस -5. आंसर इज, दोनों का आंसर क्या आएगा? -6. सो यस, स्वैपिंग द टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स does not change the sum. Next question is, can you explain why this is happening using the token model of integers that we saw in class 6 textbook of mathematics? Why this is happening ये बताना है. Will this also hold when there are terms having negative numbers as well? Negative numbers है, so will this hold? Take some more expressions and check. Yes. So yes, while adding the terms having negative numbers, grouping them in same or any order gives same result. Same result मिलता है. For example, -2 plus -4 plus -1. So here first two term we will add. So -2 -4 is -6 plus -1 which is equal to -7. और with the same example, suppose first term हमने as it is रखा and last two term हम add करेंगे. So here -2 plus -4 plus -1 that is -5 and which is equal to -2 plus -5 is -7. So result come same. Next question, can you explain why this is happening using the token model of integers that we saw in class 6 textbook of mathematics? So explain करना है हमको why this is happening. So yes, we will explain with the expression -2 plus -3 plus -1. So here -2 plus -3 first two term हमने पहले ऐड की, so which comes -5 plus -1. So -5 plus -1 is -6. So here -2 then -3 दोनों का एडिशन किया हमने एंड देन इनका पहले हमने एडिशन किया एंड देन वी एडेड -1. सो आवर आंसर इज -6. और सपोज फर्स्ट टर्म एज इट इज हमने रखी एंड वी विल ऐड लास्ट टू टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म हमने ऐड किया. -2 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस -1. सो -2 प्लस इन ब्रैकेट -3 -1 इज -4. -3 प्लस -1 इज which is equal to -2 -4 is -6. -2 प्लस -2 एज इट इज हमने रखा था एंड ऐड क्या किया था? -3 -1. सो पहले -3 -1 ऐड किया एंड देन -2 फर्स्ट टर्म हमने ऐड की. सो दस ग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन ईदर द फॉलोइंग वे गिव्स द सेम वैल्यू. कोई भी वे से ऐड किया तो इट गिव्स द सेम वैल्यू. टर्म 1 प्लस टर्म 2 पहले ऐड करो, देन वी विल एड टर्म 3 इक्वल टू टर्म 1 अगर हमने वैसे छोड़ दिया एंड टर्म 2 प्लस टर्म 3 ऐड, आंसर विल कम सेम. सपोज यहाँ पे कंसिडर किया एग्जाम्पल -7 प्लस 10 प्लस इन ब्रैकेट -11 अगेन. व्हाट हैपन व्हेन यू चेंज द ऑर्डर? -7 एंड -11 फर्स्ट अगर हमने कर दिया, सपोज हमने -7 -11 पहले ऐड किया, सो यू विल गेट -18 देन प्लस 10 विच इज इक्वल टू -8. Then add this plus 10, then will we get the same sum as before? Yes. We see that adding the terms of expression -7 plus 10 plus -11 in any order gives the same sum of -8. Does adding the term of an expression in any order gives the same value? क्या वो कोई भी ऑर्डर में ऐड किया तो सेम वैल्यू दे रहे? Yes. Take some more expressions and check. और expressions हमको लेना है to check and consider expression with more than 3 terms also. 3 से ज़्यादा टर्म लेके देखते हैं. So for example, -2 plus -1 plus -3 plus -4. So यहाँ सबसे पहले हम -2 plus -1 ऐड करते हैं एंड बाकी टर्म्स एज इट इज. So which is equal to -3. -2 plus -1 is -3. Now इसमें हम थर्ड टर्म ऐड करेंगे प्लस -4. So which is equal to -3 plus -3 plus -3 is -6 plus -4. So which is equal to -10. और in another way suppose we will add, suppose हमने first term as it is रखी and we will add second and third term and fourth term as it is. So -1 plus -3 is -4 plus -4. Now second and third term ऐड करेंगे. -2 plus
इन ब्रैकेट क्या था, -4 एडिशन करना था, सो -8. सो -2 प्लस -8 इज -10. इट इज सेम एज अर्लियर एक्सप्रेशन. सेम आंसर आया दोनों का. और थर्ड वे अगर, नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज रखी, सेकेंड टर्म भी एज इट इज रखी, थर्ड एंड फोर्थ को पहले ऐड किया हमने. सो -2 प्लस -1 प्लस, सो -3 एंड -4 इज इक्वल टू -7. नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को ऐड करते हैं. सो -2 प्लस -1 इज -3 प्लस -7 विच इज इक्वल टू -10. सो addition of the terms in any order gives the same value. Next is, can you explain why this is happening using the token model of integer that we saw in class 6 textbook of mathematics? So here using the same example अभी जो हमने solve किया, in above example पहले -2 and -1 को add किया, then -3 आंसर आया, we added -3, then answer come -6, -6 में -4 ऐड किया, आंसर इज -10. सपोज बाय अदर वे, या हमने पहले क्या ऐड किया था, -1 एंड -3. सो -1 इसमें हमने क्या ऐड किया, पहले -1 देन -3, आंसर कम्स -4. -4 में -4 ऐड किया, देन लास्ट, देन आया -8, देन इसमें -2 भी ऐड किया, सो आंसर कम्स -10. इन थर्ड एक्सप्रेशन first we added last terms -3 and -4, आंसर comes -7. फिर इसमें हमने फर्स्ट टू टर्म्स ऐड की, -2 and -1, उसका आंसर आया -3, देन -3 and -7 ऐड किया, that comes -10. Manasa is adding a long list of numbers. Long list of numbers ऐड करिए. It took her 5 minutes to add them all and she got the answer 11,749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number 9,055. Does she have to start all over again? So क्या उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐड करना? No. There is no need to start all over again. Now she has to add fourth term ही उसको ऐड करनी बची, that is 9,055 to the sum she got. उसके पास सम कितना आया है, 11,749. सो उसको ओनली कौन सी टर्म ऐड करनी है, 9,055. एंड बाय एडिंग 9 + 5 14 कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 5 10 कैरी 1, 1 + 7 8 + 0 8. Now 1 + 9 is 10, 0 carry 1, that is 2. So answer is 20,804. So what she did, she has to add fourth number, that is 9,055 to the sum she got, that is sum था हमारा 11,749, to get the correct sum of the list of given numbers. So in mathematics we use the phrase commutative property of addition. Instead of saying swapping term does not change the sum, similarly grouping does not change the sum, is associative term of addition. So commutative property क्या था यहाँ पे, a + b is equal to b + a. Associative property क्या था, a + b + c is equal to a + b + c, or you can write a + c + b. If you like this video, then press the like button, and if you want to watch more such content, then subscribe to the channel. Thank you.